Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Students, here I am your teacher, Miss Fatma Said, and I welcome you to the online lecture of Social Studies. It's the third lecture, okay? And it's 22nd April 2021, Thursday. Well, students, as you know that in the previous couple of lectures, we have started our lesson number 5, which is Culture and Civilization of Pakistan. And here you can see that we have done three topics. We have studied about the culture of three provinces. Culture in Balochistan, culture in Sindh, and culture in Khyber Pakhtunkhwa. In today's lecture, we are going to study about the culture of Punjab and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Okay? Okay, let's begin. Okay, students, before starting today's lecture, before coming towards today's topic, let me introduce to you some new words which we are going to study in today's lecture. So, students, here are some new words. So, students, when we study new topic or content, if we don't know about some new words or the meanings, it's difficult for us to understand the concept of that topic or understand that topic. So I was thinking कि क्यों ना हम इन वर्ड्स को पहले प्रोनाउंस करें कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या और इनका मीनिंग क्या है. So what you have to do with me? Yes, you have to pronounce these words with me 2 times, okay? Okay, let's begin. First word is historical. Pronounce it with me. Historical. Historical. Historical means तारीखी. कोई पुरानी कोई बिल्डिंग आप देख सकते हैं. हमने सोशल स्टडीज़ में पहले भी क्लासेस में पढ़ सकें कि these are historical buildings such like मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क, शाही किला, etc. So what was the pronunciation? Historical. Next word is hospitable. Yes, you are pronouncing it with me. Hospitable. Hospitable means मेहमान नवाज. आपने देखा होगा हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि जी लाहौरी या पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज, मेहमानों को बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, डील करते हैं. सो इट इज़ हॉस्पिटेबल. नेक्स्ट वर्ड इज टर्बन. व्हाट इज़ इट? यस, टर्बन. टर्बन ये देख सकते हैं पगड़ी. Here you can see that in the image an old man is wearing the green turban on his head. Turban. Okay. Well, the fourth word is Balti. Balti. What is it? Balti. It is actually the language which is spoken in Gilgit-Baltistan. Okay, what is it? Balti. The next word is embellish. 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 Embellish means सजाना, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, बीड्स के साथ, स्टोन्स अट्रैक्टिव बनाना उस चीज़ को. यू कैन सी दैट उन्होंने क्या किया हुआ है, मतलब नॉर्मल ड्रेस को बीड्स के साथ, स्टोन्स के साथ सजाया हुआ ताकि वो अट्रैक्ट करे. एम्बेलिश. नेक्स्ट वर्ड इज फिरान. PH की क्या साउंड होगी? फिरान. फिरान. इट इज़ बेसिकली एक लूज शर्ट जो कि मेनली आप हमारे कश्मीर में गिलगित वाले साइड में जाके बहुत कोल्ड मतलब टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो वहाँ पे लोग पहनते हैं इसको. बोथ मेन एंड वे वेयर दिस फिरान. इट इज़ जस्ट लाइक अ लूज शर्ट. इट कीप्स देयर बॉडी वार्म. ओके, आई होप कि आपको इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और इनके मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे. सो नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ओके, लेट्स बिगिन. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Okay, ji. Culture in Punjab. People of Punjab are mostly attached with agriculture. They are lively and hospitable. कि पंजाब के लोग मोस्टली क्या होते हैं, एग्रीकल्चर से मतलब बहुत एक जुड़े हुए. देखो मोस्टली लोगों का जो होता है ना जरिए माश, यानी कि एक अर्निंग का सोर्स वो एग्रीकल्चर, यानी कि लोग मोस्टली गांव वगैरह में अगर हम देखें खेतों में काम करके, अपनी ज़मीनों में काम करके वो अर्न करते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, उनका अर्निंग सोर्स. दे आर लाइवली. आपने देखा होगा लोग क्या कहते हैं कि पंजाब के लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, हॉस्पिटेबल यानी कि मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा होते हैं.
So, well, if we talk about the language, so most of the people speak Punjabi and Saraiki, yes. Most of the people speak Punjabi and Saraiki. If we talk about traditional dresses, so the traditional Punjabi dress is dhoti, kurta and turban. For men, shalwar kameez and dupatta. For women, here you can see that कि men का dress क्या है धोती कुर्ता and turban on their heads और women dress क्या है शलवार कमीज and दुपट्टा. Women in villages also wear paranda to tie their hairs. आपने देखा होगा कि बालों को बांधने के लिए हमारे ना सिर्फ विलेजेस में ना सिर्फ गाँव में हमारे यहाँ पे भी बहुत से लोग परांदा मतलब यूज़ करते हैं पहनते हैं अपने बालों को बांधने के लिए. क्लियर? ओके. Well, if we talk about the traditional famous foods of Punjab, so these are saag and makai ki roti, वही यमी लस्सी पाए एंड जलेबी. इनसे तो आप बहुत मतलब फेमिलियर होंगे. हमें पता है कि हम आम रूटीन में यूज़ भी होते हैं मतलब ट्रेडिशनल जिसे कह लें कि देसी फूड्स हैं हमारे. सो आप में से भी आई होप बहुत से लोग इन्हें पसंद करते होंगे बहुत शौक से खाते होंगे. साग मकई की रोटी लस्सी गर्मियों में खासतौर पे पाए और जलेबी. So if we talk about the historical buildings in Punjab, so Punjab has a number of historical buildings by Mughals such as Badshahi Mosque and Shahi Qila. Students, here you can see that these are the pictures of historical buildings such as Badshahi Mosque. On the left side it is Badshahi Mosque and on the right side it is Shahi Qila. These are the historical buildings. बहुत तारीखी इमारत हैं जो मुग़ल दौर में बनी हुई हैं मुग़ल्स ने बनाई हुई हैं. Well students, I hope everything is clear to you about the culture in Punjab. So now let's move towards the next topic, which is culture in Kashmir and Gilgit-Baltistan. Okay, let's begin this topic. People of Kashmir and Gilgit-Baltistan are hardworking but living this simple life. वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं मेनली हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी मेहनती तो बहुत होते हैं लेकिन सादा ज़िंदगी गुजारने के आदी होती है. ये नहीं कि लेविश ज़िंदगी हो. आपने देखा होगा मोस्टली वो हट्स में रहते हैं बहुत सादा से लोग होते हैं. दे बिल्ड देयर हाउसेज विद वुड एंड कीप द रूफ स्लोपिंग. स्लोपिंग जिसे कहते हैं ढलान स्लोप होना. सो रेन वाटर एंड स्नो स्लिप डाउन. है यू कैन सी दैट उनके घर किस तरह से हैं कि जो रूफ्स हैं घरों की छतें जो हैं वो एक ढलान स्लोप सी बनी हुई है ताकि जो बारिश का पानी जो स्नो हो वो ना से ऊपर ठहरे बल्कि वो स्लिप हो जाए. ठीक है स्लिप डाउन. यू कैन सी दैट इज एन इमेज ऑफ द कश्मीर वैली आज़ाद कश्मीर. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. कहते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है. वाकई कश्मीर जन्नत है. यू कैन सी दैट इन द इमेज कि हमें किसी मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं. हमारी कंट्री है ही इतनी खूबसूरत कि हमें किसी और मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है. सारी ब्यूटी हमारी अपनी कंट्री में है. कश्मीरी एंड बल्टी आर द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द एरिया. अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज मेनली बोली जाती है और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ मेन लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है. येस इट इज़ बल्टी. ओके. Well, if we talk about the traditional dresses of the Kashmir and Gilgit-Baltistan, so the traditional Kashmiri and Balti dresses are colorful and embellished. Embellished मैंने आपको क्या सजे होते हैं मतलब with buttons and beads. Here you can see that simple से ड्रेस उनको embellish किससे किया कि buttons के साथ beads के साथ ताकि वो attract करें. Okay. Men and women wear loose clothes called फ़िरान की इमेज मैंने जस्ट लाइक आपको पहले दिखा दी है स्टार्टिंग में कि वो एक लूज सी शर्ट होती है जो कि मोस्ट विंटर में वो लोग पहनते हैं क्योंकि वो उन एरियाज़ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है. तो मेन एंड वुमेन बोथ वेयर दिस फ़िरान. इट्स पर्पस इज़ टू कीप देयर बॉडी वार्म. फ़िरान. वुमेन कैरी शॉल एंड वेयर ज्वेलरी. मेनली वहाँ पे शॉल कैरी दुपट्टा नहीं क्योंकि ज़्यादा विंटर्स में वहाँ पे मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पे दुपट्टे की वजह शॉल कैरी करती हैं वुमेन और ज्वेलरी भी पहनती हैं. मटन पुलाव एंड बाकर खानी आर फेमस फूड्स ऑफ कश्मीर. अगर हम कश्मीर के फेमस फूड्स की बात करें तो क्या है
mutton pulao and bakar khani. Here you can see that in the image. First image is mutton pulao and the second one is showing the bakar khani. These are the famous foods of Kashmir. Chop shuro and mumtu are famous foods of Gilgit Baltistan. Chop shuro में हिंदी आप कह सकते हैं जस्ट लाइक आपने देखा होगा पिज़्ज़ा पराठा या चॉकलेट पराठा न्यूटेला वाला, तो उसी तरह का उनका एक फूड होता है जो कि एक फास्ट फूड में आता है, उसको कहते हैं चाप शोरो. सेकेंड वन इज़ ममचू, जस्ट लाइक आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कचौरी जिस कहते हैं, उसी तरह की इनकी होती देसी फूड है, सो कहते हैं ममचू. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Okay students, before starting today's lecture, before coming towards today's topic, let me introduce to you some new words which we are going to study in today's lecture. So students, here are some new words. So students, when we study new topic or content, if you don't know about this, well students, that's all about today's topic. I hope everything is clear to you. Now, if you have any query, you can ask in the groups. Well, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.